State team and a cricket enthusiast. The two captains in readiness. We have Abhipray Sonkar for Calangute Champs, and we have Danny for Qayi Warriors. Our guest will be spinning the coin for the first time in this tournament. Shri Vijay Rao Kavale, CEO Events Jenny. Also we have match referee Saruday Naik, BCCI match referee and former Goa state captain. Tails is the call from Danny. Danny, congratulations, you have won the toss. What is your opt and the reason behind it? We would like to bowl first because of the decent all-rounders and the bowlers, and also it's the first game. It's a lot of dew here, a lot of grass here, so we want to utilize our bowlers first and drop them to less than 120 of the target, and we would like to chase when the sun is up and the pitch is getting better. How is the feeling going on playing the opening encounter, the first MACQUA State Premier League? They say no, eat the worst frog first, so we would like to play first and experience everything before we see and experience from other teams. Rather, we give them the experience what we have. Yes, all the best. Thank you so much. Abhipray, having lost the toss, does it make any difference for you? No, it doesn't, because actually we were also planning to field first, but still it's okay because we have plenty of our talent and who will open here, so no problem. It's okay. You must have been playing many tournaments, T20 tournaments, but what do you think is the difference of playing this MACQUA State Premier League over here? One word, this is the biggest of amongst all, because I never seen some local tournament playing in a GCA like a state ground, so this is something new and this is something biggest of amongst all. And what do you think is a good total to defend on this surface? We'll see, but still it looks like 180. Yes, all the best to you. Yeah, thank you. Along with us, we have our guest, Sir Vijay Rao. Sir, welcome. How does it feel to be a part of this MACQUA State Premier League? It feels awesome to be a part of the MSPL. Goa, though, is a wonderful place to always come. The experiences in Goa are great. This seems to be a wonderful ground, a great wicket, a fantastic day for cricket. Being a cricket enthusiast, I'm really happy and lucky to be a part of this prestigious event. And your message to all the teams associated with this? Play fair, fight hard, all the best. Yes, thank you. Thank you very much, sir. Match referee. Raghavan, tu ira. तू असं गेस्ट कडे ना फोटो काढता मरे ಅದು ತೊಯ್ಕಿರಿ ಬರ್ತಲೆ आता एक टाइम मातसो विकेटीच्या फाटी हाडून
will be enlightened to mark this MACQUA State Premier League Open. Ke parlor hai. Long time dillo mare tumka. Okay. Open. MACQUA State Premier League for I request the starting with the rituals, breaking of the coconut, invoking blessings for bringing success and profit to the tournament. Bales kadiya. Hello.
It's okay, sir. It's okay. Yeah. Let it be. Yes, with this we mark the opening of the tournament. I request Shubham to kindly welcome to our chief of the morning, Shri Vijay Rao Kavale, CEO of Events Jenny from Mumbai. Also present a floral welcome to our match referee, Sir Uday Naik, match referee, also former state captain. Okay, presenting the floral, the president of MACQUA State Premier League. All the best, guys. All the best. So convey your wishes. Actually, wish couldn't. Wish couldn't. Some runs and have some fun. So you can convey the wishes to both the teams. People's want I request for the national anthem, and I request sound master to kindly play national anthem once everyone is ready. Yes, DJ kindly play the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की वंदे। Yes, everyone.
versus the Qayi Warriors. Qayi Warriors winning the toss and deciding to bowl first. So let's start with the first match, a cracker of a match between both these teams. Let's check this. Raj and Saina, the opening pair out in the center for Calangute Gems. And to bowl the first over. It's Yash to start the proceedings for Qayi Warriors. It's 20 overs match. So you can see just two fielders outside the 30-yard circle. The first over, the power plays. There is a third man, deep third man, and a fine leg. And here we go, Yash with the first ball, and Raj on strike. Oh, what a delivery, what a start. This is a brilliant start by this bowler. Wonderful delivery. And first wicket down for Calangute Gems. A brilliant delivery, a brilliant start for Qayi Warriors. It was a wonderful delivery, the good line delivery, just missing it completely there. Raj. And the stumps discarded completely. A pleasing start for this team. It's Qayi Warriors. And it's Yash with the first breakthrough on the first delivery itself. And the first wicket down for Calangute Gems. It's green. It's a pretty much fast on the wicket. And it's an early morning start. Always helping the fast bowlers. And that was the example on the first delivery itself. So the new batsman in is Sanjay will be on strike now. It was a wonderful start by Yash. A wonderful delivery, a good line delivery to start the proceedings, and it was the wicket. Always a pleasing sight for any fast bowler, the first ball of the match. And the stumps dislodged. A new batsman in is Sanjay will face Yash. Here is Yash once again. Wonderful delivery, nicely played there, nicely defended. A tall bowler, Yash, with the jersey number 7. Good high arm action for the bowler. And a wonderful organization of this tournament, the MACQUA State Premier League. The first match between both these teams. It's Calangute Gems versus Qayi Warriors, and this is the first over going on at the moment. This time, bit favored. Down the leg, white ball signaled by the officials. So first runs on the board for Calangute Gems in the form of extra. So 1-1 with the loss of 1 wicket. And it's been a wonderful start by Qayi Warriors, and especially by Yash, the way he is bowling. Once again, wonderful delivery there. Wonderful delivery once again there. Some bounce for this tall bowler. Just going down the leg.
as signaled by the officials, as communicated by the officials. So brilliant start by this bowler. There's something in the pitch for the bowlers, and he is exploiting it pretty well at the moment. It's Yash from Qayi Warriors, bowling this first over and bowling it brilliantly. Seems to be in great rhythm, a great bowling action, high arm action. And Sanjay on strike. Just defending it, playing out this first over. Once again, this time down the leg. Ball racing away towards the boundary ropes. Let's wait. Yes, it's by leg by signal by the officials and a boundary. So the second wave of delivery onto the pads and the ball goes away for a boundary. Score moves on to 5 runs with that boundary. It was a brilliant start by Yash, but thereafter an extra, and now just missing his line on that occasion. This time much shorter delivery. And a third delivery, I guess. Changing his length there on that occasion. He was pretty much full on good length. But thereafter the change of delivery, pretty much shorter delivery with great pace. So wonderful start, a great day for cricket, a great venue for this tournament. This time much fuller, but straight to the fielder. Nicely fielded, and here is the end of the first over. After completion of the first over, score is 5 runs with a loss of 1 wicket. Calangute Champs, Qayi Warriors winning the toss and deciding to field first in this first match, and the score is 5 runs with the loss of 1 wicket. So you're watching MACQUA Premier League, and the prime sponsors for this tournament are Majestic Bhojan Restaurant, Purvarim, Deserts and more, Ashirwad Hotel, Purvarim. Sponsors are Event Jimmy, Indian Experiences Private Limited, Mumbai, and broadcast partners are AB25. So you're watching the MACQUA Premier League, and this is the first match between the Calangute Champs versus the Qayi Warriors. Bowler's name, please. Twelfth man, please. 12th man. 12th man of Qayi Warriors, please. Be in the commentary box. Please hurry up. Nicely pulled there, nicely pulled. Much fuller. The new bowler starting the second over for Qayi Warriors. Danny bowling the second over for Qayi Warriors. Just a single from Sainath. First ball was the delivery of the second over, and thereafter the single, just single. They have lost the first wicket. Sanjay and Sainath, the two batters out in the center. A wonderful delivery once again, trying to go for it, just couldn't go for the shot, couldn't complete the shot, and the second wicket once again, and it's bowled. So 2 overs, 2 wickets, and Sanjay departs, the second wicket down for the Calangute Champs.
So once again, a brilliant start by Qayi Warriors. We saw in the first over on the first delivery itself, the first wicket, and now Sanjay departs. So 2 wickets, 2 batsmen going back to the hut without scoring. A brilliant start to 2 wickets, a brilliant start by Qayi Warriors. That's the start you want once you're bowling, once you decide to bowl after winning the toss. And Danny bowling the second over. Check. And it's new batsman in. Mohit will be on strike. Mohit will face Danny. Check. Test. They're charging towards it. Check. Mic test 1. And a single. It's been a brilliant start, as I've said. Check. Mic. There is something for the bowlers in this pitch, in this wicket. And they are exploiting it. In the first over, we saw Yash, and now it's Danny with the ball. Bowling wonderfully in the second over. Nicely defended. They know they have lost a couple of wickets. But more importantly, they need to stitch in a partnership here. Just to take the scoreboard ahead, to move the scoreboard ahead. And get the team to a respectable total. And this time it's an outside edge, the ball goes away. Nicely fielded in the deep. Nice chase by the fielder. And here is the end of the second over after completion of 2 over. Score is 9 runs with the loss of 2 wickets. So it's Yash once again continuing from the same end. And Mohit will be on strike. Mohit and sign at the batters out in the center for Calangute Champs. What delivery, wonderful delivery. It's an exciting sight for any fast bowler and also to all the spectators to watch this bowler bowl. He has found his rhythm and bowling wonderfully. A lovely delivery with some decent pace. This time much shorter, couldn't get the connection right there, and it's a wicket, another wicket for Yash, and third wicket down for Calangute Champs, and Mohit departs. We saw the first delivery was a shorter one and followed by the second one. Couldn't get the timing, couldn't get it right, and straight to the fielder there. So one more wicket down on Mohit departs, and it's once again Yash for Qayi Warriors in the second over, picking up his second wicket and the third wicket for his team.
So Qasim taking that catch. He was trying to pull that ball. It just hurried on him. New batsman in as Manish marking his guard. A wonderful start once again. Great start by this fielding side, Qayi Warriors, and especially by Yash. Sainath still there on non-striking end for Calangute team. Once again, wonderful delivery of great ball. Just short of the good line. Just ball. Hold on to the batsman once again with a good line and length. He is on a roll here, Yash. An exciting sight for all the spectators with this kind of bowling, with this kind of pace and the length he is hitting. He seems to be in great freedom now. This time down the leg. It's trying to bowl it fuller. That's a leg by signal by the officials. Trying to go for the fuller delivery on that occasion, just missing his line. So leg buys. So another single. With that single score moves on to 10. But most importantly, for Qayi Warriors, they have picked up 2 wickets in this first power play. They have been able to get those 3 wickets, and all thanks to those fast bowler Yash and Tani. And now for Calangute team, once again, they need to soak down this pressure and build a partnership to get to a respectable target. Once again, a lovely delivery, a brilliant delivery. Just missing the outside edge on that occasion. This has been a wonderful over. And the kind of pace and length he's bowling at. Once again, the ball taking off from the surface. It's a great bowling friendly surface, I guess. It's been hard there. And a bit of grass and bit of help for these bowlers. And the carry Yash is getting is wonderful to see on this wicket. Once again, trying to play and that leaving the ball alone. So the dot ball to finish of the third over after completion of 3 overs. Score is 10 runs with the loss of 3 wickets. The Calangute Champs. And this time Danny missing it. Danny missing his line on that occasion. And it's first boundary for Calangute Champs. And it's Manish with that boundary. So short to release some pressure for the batting side. They were just defending there. But just got that delivery and played. And guided it nicely to boundary ropes. Once again, Midfielder nicely timed. What a shot! This is the big finish. He's turning on the heat. 2 balls, 2 boundaries. Much fuller onto the wickets. 1 to the square leg region. And now into the cow's corner. Wonderfully timed, nicely timed. And consecutive boundaries for the batting side and for Manish.
Nicely timed shot. Once again this time. Just brought his length back. Danny. He was much fuller on the previous two occasions and was dispatched for a boundary. Just pulling his length back. And once again, nicely played Manish. The two boundaries was wonderful to see. Once again, they are appealing, but nothing signaled by the officials. The pretty experienced officials out in the center for this tournament. Just clipping something there, nothing signal, and a dot ball. Once again it was down the leg, but couldn't capitalize on it on this occasion. What? Once again on a good line, just outside the off stump, trying to go for it, Manish. That's a kind of length and line he needs to bowl here, Danny, the fourth stump line. His partner bowling wonderfully from the other end, and he needs to support him from this side. Once again, Matfula away from the bowler, just a single. Nicely played there. The two boundaries, then some great deliveries by Danny, and a single to finish off the fourth over. After completion of 4 over, score is 19 runs with the loss of 3 wickets. 19 runs on the board with the loss of 3 wickets after completion of 4 overs. It's been a quiet start, but Manish and Sainath still there for Calangute Champs. And this is the first day of MACQUA State Premier League. The prime sponsors for this tournament are Majestic Bhojan Restaurant Purvarim, Deserts and more, Ashirwad Hotel Purvarim. Sponsors for this tournament, Events Genie, Indian Experiences Private Limited, Mumbai, and broadcast partners are AB25. So you can watch this tournament live on AB25 YouTube channel. The first day of this tournament, the first match, Qayi Warriors winning the toss, deciding to bowl first, and they have been brilliant, and especially this guy, once again, bowling his third over, it's Yash. Wonderful delivery once again, hitting the deck hard on this occasion. A nice thing by the Qayi Warriors, their captain. He wants another wicket. He seems to be in great rhythm. So giving an extra over to this bowler, Yash. As I said, he's tall and the high arm action helping him to extract that extra bounce from this wicket. Once again, a lovely delivery. So quick single on that occasion. It's been a great start of the tournament, the MACQUA State Premier League, between these teams. It's always wonderful to see the fast bowlers delivering and finding some help from the wicket. Wonderful delivery, once again hitting the deck hard and getting that bounce. That height, that release, just those strong wrists behind that ball, just getting that extra bounce, and that's causing the problems for the batters at the moment. This time, whoa, trying to go for just charging towards the bowler, missing it completely on that occasion, and another wicket. The third wicket down, the third wicket for Yash. And it's the and Sainath departs.
just trying to move on, trying to score some runs for his team. And he departs. Third wicket for Yash and the fourth wicket for the team. Qayi Warriors. They're charging into this match. And it's Sateen. New batsman going in is Sateen. And will face Yash. As we saw from the first over itself, from the first ball, they are on the target, they are on money. The Qayi Warriors team won the toss, decided to bowl first, and the bowlers are delivering brilliantly for the side. Especially this guy, a tall bowler Yash, picking up the third wicket in his third over, and score is 20 runs with the loss of 4 wickets. Exclusive start by Qayi Warriors of this tournament and of this match. Sateen, the new batsman. Wonderful delivery once again, just moving away. Just moving away from the batter. Another wonderful delivery by Yash. Just missing the outside edge on that occasion. Change in field. Getting the extra fielder on the offside. A wonderful thing to do, to get one more fielder on the offside. The way he is bowling, he's charging. Sateen once again is on strike and will face Yash in this 5th over. They are peeling and it's out once again, another wicket this time, just keeping low. Just kept low a bit. And the 5th wicket down in the 5th over itself. So after completion of 5 overs, score is 20 runs with the loss of 5 wickets, the Calangute champs. And they are struggling at the moment. And it's all because of this bowler. It's Yash from Qayi Warriors picking up his 4th wicket in his 3rd over. After completion of 5 overs, score is 20 runs with the loss of 5 wickets. And you're watching the MACQUA State Premier League 2025 at this wonderful ground, the GCA ground, Purvorim. And there's the first match between the Qayi Warriors and Calangute champs. So after completion of 5 overs, it's 20 runs with the loss of 5 wickets, the Calangute champs team. Yash picking up the 4th wicket. And Tenny once again continuing. Much fuller. Just through his hands there. And nicely fielded in the deep. So couple of more runs added to the tally. Check.
It was a good shot, just a lofted shot going through the hands. There was an opportunity, but I guess a difficult opportunity for the bowler on his follow through. Check. Losing 5 wickets in the play itself, it's always difficult for any team. Much slower. Just trying to bowl the slower delivery. It was a full toss and nicely placed into the gap for a boundary. Third boundary for Manish. He's a lone warrior there for Calangute Champs team. He seems to be in a great touch, but somebody needs to be there, needs to help him to get their team to a respectable target, respectable score. Once again pulling his length back there. Dot delivery. A wonderful start of this first day of MACQUA State Premier League 2025 between both these teams, and bowlers delivering on this first day. This time a wayward delivery outside the off stump, pretty wide, and wide ball signaled by the official. Danny just struggling a bit, I guess, with his line in this over. He was brilliant with the previous 2 overs, and now he's been trying something different, and Manish also going for it in this over. Once again nicely timed, but there is protection. A deep long on. So another single, just a single there. Score moves on to 28. Mihir, the new batsman, in and will be on strike. Will face Danny. Mind you all, this is the last over of the power play. The 6th over of this innings. Once this time trying to go for the shot there. Trying to go for an expensive cover drive. Mihir. Missing it. And a dot ball. So here is the end of the power play. And the first 6 over after completion of the power play score is 28 runs with the loss of 5 wickets. The Calangute Champs team put into bat by Qayi Warriors after winning the toss. And a great start, great power play for the fielding side for Qayi Warriors. And picking up those 5 crucial wickets. The top order of the opposition. Once again, yes, it's Yash to bowl his final over. Yes, Yash bowling his final over. This time nicely played by Manish. Nicely covered there. He's a lone batter who has found the middle of the blade in this innings and needs to continue in the same manner to tweak his team to respectable target, respectable score. But at the moment it's Yash. He's bowling his last over, final over
Captain doing the right thing, giving him an extra over. He wants the wicket. Shorter delivery this time once again. A brilliant delivery. We saw him bowling the short stuff in the previous over also, and followed up by a fuller delivery there. But he is the bowler who is getting some extra bounce from this wicket. Just depicting that there is something for the bowlers. If you have that courage to bend your back, there is something for the bowler. This time once again a wonderful delivery, moving away from the batter. Some great stuff by this young bowler, Yash from Qayi Warriors. Started off with the first ball wicket, just setting the tone for his team. And now once again continuing in the same manner, again and again. And in between, just bouncing those deliveries with those short, quick deliveries. Just keeping the batters guessing at the moment. This time the fuller delivery. Nicely played. And a quick single there. They're playing sensibly at the moment. Both these batters is Mihir and Manish. Manish has found the timing and has spent some time here on this wicket. So he is the main wicket and he needs to continue. And Yash will try to get this wicket to try and get another wicket in his final over. A short delivery, and what a timing on that occasion. The ball goes all the way, the first maximum of MSPL, and it's Manish with a huge one. This time finding the middle of his blade and the timing, just taking the ball away and all the way over the boundary ropes. The first maximum for Calangute Champs and for Manish. The first 6 of the tournament and of this match. A wonderful connection. We were praising the bowler, but he's set now, Manish. Just timed it perfectly, and the pull shot just taking away the ball over the boundary ropes. And with that 6 score moves on to 36 now. Change in field, just moving the fine leg much squarer. This time just guided to the third man, nicely timed once again. They're going for the second run, yes, and they will get it quite easily. So sensible play, got the big shot, the big boundary, and then just guided it for more couple of runs. So Yash completing his spell there, bowling 4 overs, giving away 11 runs and 4 wickets. A brilliant stuff, a brilliant performance by his team, bowling 4 overs on a trot. It's not always easy in this scorching hit, but he delivered a brilliant spell for his team, for Qayi Warriors, bowling 4 overs, picking up 4 crucial wickets and giving away just 11 runs in those 4 overs. So he has completed his spell. And change in bowling. And change in bowling. Some spin into the action, and it's Namesh to bowl his left arm spin. A great platform set by both the opening bowlers for Qayi Warriors. Managed to pick up those 5 crucial wickets in the power plays itself. Now let's see what the spinners can do on this track.
Once again getting his fielder there. Long on, long off. Deep point. Deep square leg. And Mihir on strike. Just guided there. And a single. It was the brilliance of those fast bowlers, especially by Yash, that the Calangute champs are in this situation at the moment. But best thing for the betting side is that Manish is still there and he is looking great. We saw some brilliant shots from his blade, a wonderful timing. Once again, nicely played into the gap with a single. Risk-free cricket at the moment, just moving the scoreboard ahead with those singles. And they need to stitch in a partnership here to get to a good score. This time much fuller. Once again, just played along the carpet down the ground for a single. Just need to continue in the same manner. It's an early start of this match. We saw this time couldn't get underneath it. Trying to go into the Cow's corner region. Just needed to clear that fielder, but couldn't get underneath that ball. And just another single added to the tally. This time over the head of the bowler. The long off fielder will cut it off. So another single, one more single. So they are doing it in singles. And that's the way to do it. After losing 5 wickets in the power play itself. Just need to steady the ship here. Nicely played. And here is the end of the 8th over. After completion of 8 overs, score is 43 runs with the loss of 5 wickets. Calangute champs. And this is the MACQUA State Premier League 2025. The first day and the first match of the tournament. Between the Calangute champs and Qayi warriors. And after completion of 8 overs, score is 43 runs with the loss of 5 wickets. Calangute champs after putting into bat by Qayi warriors. A wonderful tournament. And it's Sarfaraz Mohammad to bowl the next over. So from the both ends, now it's spin. Nicely spread. Leg side field. And it's Sarfaraz with his leg spin. Just couldn't pick up that ball cleanly. A quick single on that occasion for both these batters. They need to continue in the same manner and do it. They are doing it. After 8 overs, score is 44 runs. And Manish will be on strike. Manish will face Sarfaraz. You can see straight away the bounce. Because of those revolutions put on the ball by this bowler, the leg spinner. Much flighted delivery. A bit flight on that occasion. Nicely played to the long off fielder for a single. Not taking any risks against the spinners here. Both these batters, they're happy to pick up those singles. This time trying to sweep it,
was an appeal, but denied by the official. Sarvaman Mayekar, the main official, the main umpire. Nicely cut, brilliantly timed that ball, running away, racing away towards the boundary ropes. So brilliant shot by Mihir. On the previous delivery, he tried to sweep that ball, just missing it completely. And here, just waiting for it, just using the pace of the bowler, just guiding it between both those fielders. So score moves on to 49. Short ball. There is a protection in deep. So just a single. And here is the end of the 9th over. After completion of 9 overs, score is 50 with the loss of 5 wickets, 50 up for Calangute Champs. They are recovering after the power plays. The power play all belong to that bowler, the tall bowler from Qayi Warriors, but thereafter Manish and Mihir stitching in a partnership for Calangute Champs. Once again, Namesh to continue. Attacking with the spinners from both the ends. Nicely bowled. A good line delivery. He's not trying to turn it away from the batter, just bowling it straight and quickly. Much quicker through the air, Namesh. Once again. Nicely played. Just a single. Being able to keep the batters quiet in these overs. Just we saw a brilliant boundary, nicely timed by Mihir in the previous over. Brilliant delivery, just moving away. Just turning away on that occasion there. A bit surprise. Manish on that occasion. The ball just gripping and just turning away on that occasion. A surprise delivery for the right-handed batsman. This time down the leg. Trying to bowl the quicker one down the leg, wide ball. Another extra added to the tail. The score moves on to 52. Nice bowling once again, and equally well batted by both these batters. Nicely bowled. Much slower through the air on that occasion. Ball just straightening enough and just going straight. We saw just a single delivery turning away, and most of the delivery just bang in on the target, on the money, on the stumps from this bowler. Once again, but straight to the fielder there. Namesh bowling it, keeping the batsman quiet. He's been able to do it so. Once again the delivery to finish off the 10th over, and after completion of the 10th over, score is 53 runs with the loss of 5 wickets. Qayi Warriors winning the toss, deciding to bowl first. A brilliant power play. A brilliant spell by Yash, picking up the 4 wickets in his 4 overs. And after the end of 10 overs, score is 53 runs with the loss of 5 wickets. The Calangute Champs. This is a tournament, the MACQUA State Premier League 2025.
Prime sponsors for this tournament are Majestic Bhojan Restaurant, Purvarim, Desserts and more, Ashirwad Hotel, Purvarim. Sponsors for this tournament, Events Genie, Engine Experiences Private Limited, Mumbai, and broadcast partners, the AB25 YouTube channel. So after the 10 over, after the halfway mark, score is 53 runs with the loss of 5 wickets, and also change in commentary box. I request Krishna sir to please continue with the Hindi commentary. थैंक यू। वाइट के साथ शुरुआत मैदान पर इस वक्त इस ओवर में वाइट +2 वहां पर मिलते हुए और फुल टॉस गेंद, बिल्कुल गेंद बल्ले के बाहर से टकराती हुई वाइट इस गली पर फील्ड हुई गेंद, रन लेने के आसार समाप्त होते हुए 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। और फिर सिलेक्शन पर गेंद बिल्कुल स्वीप करने का प्रयास किया, वहां पर वाइट बॉल का इशारा अंपायर का निकलता हुआ, और एक इस ओवर में वाइट मतलब 57 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। और इस बार स्वीप किया, बहुत सुंदर टाइमिंग, स्क्वायर सीमा रेखा से बाहर निकली गेंद, 4 रन मैदान पर। थोड़ा सा महंगा और निकलता हुआ, 2 वाइट निकले, 2 22 निकले वहां पर वाइट के रूप में, वहां पर दौड़कर रन निकाले गए, मतलब वहां पर 4 और ये 4 लगभग 8 रन का ओवर निकला मैदान पे। बातचीत हो रही है कि आपने जब लेग ब्रेक करते तो गेंद को बिल्कुल स्टंप के आसपास डालना पड़े, आपने बिल्कुल स्टंप के बाहर पिच किया और उसी का फायदा मिला बल्लेबाज को। अब लेग स्लिप लगाया गया मैदान में, लॉन्ग लेग को पीछे रखा, लेग स्लिप को अंदर रखा, पॉइंट को अंदर रखा, शॉर्ट कवर मिड ऑफ जो कि अंदर रखा, और पिच गेंद बिल्कुल बढ़िया वहां पर उठाकर खेलने का प्रयास किया, वहां पर चूंकि शरीर पर टकराई गेंद, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर के गेंद को फ्लाइट दिया, वहां पर मौका मिला हाथ खोलने का, लेकिन शायद चूके वहां से। सोच बहुत अच्छी है, यहां से विकेट चाहिए मैदान पर उनको। और फिर से और पिच गेंद बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, बल्ले के निचले से बल गेंद मिड विकेट सीमा रेखा का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, 1 रन वहां पर बना और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 62 रन पर। ऑफ स्टंप के बाद शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल धकेला गेंद को गली पर, थोड़ी सी गफलत वहां पर, लेकिन फिर से देखिए गली का खिलाड़ी थर्ड मैन सीमा रेखा तक बिल्कुल पहुंच रहा, वहां पर 1 रन वहां पर निकाला गया और 1 रन के साथ 63 टीम का स्कोर इस मैच में। और इस बार पैड पर लगी इम्पैक्ट सबसे अहम था, पर इम्पैक्ट ही के बाहर था शायद, इसलिए इशारा कर दिया पर नॉट आउट का मतलब डॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 ओवर समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 63 पर, 4 विकेट 5 विकेट नुकसान के बाद। कई बार इस टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, शुरू के 3 ओवर में 10 रन खर्च किए थे, वहां पर 3 विकेट नुकसान के बाद अंतिम अगर आप बताइए तो 11 ओवर हो चुके, जहां पर पार्टनरशिप बन चुकी इस मैच में लगभग 47 रन की, 5 विकेट अब निकल चुके, उतनी तो हुई नहीं पार्टनरशिप लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर। ओह शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया पर, चूंकि तो उससे नीचे रहती हुई इस बार अच्छी बॉलिंग लगातार मैदान पर इस वक्त इस मैच में। गेंदबाजी के मोर्चे पर नया गेंदबाज जो कि नमेश मैदान में पहुंच चुका है
स्ट्राइक पर बैटर ऑप्शन के बाद कट किया गेंद को बैकफुट पॉइंट पर, फील्डर वहां पर तेज निकला, थ्रो बिल्कुल ठीक ठाक निकला, लेकिन एक रन वहां पर बनता हुआ। एक रन के साथ टीम पहुंची 64 रन पर इस मैच में। खेल चलता हुआ 12वें ओवर का। ऑफ्टर के बाद कट किया, बहुत तेज शॉट, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 4 रन मैदान पर। हाथ खोलने का थोड़ा सा मौका मिला मैदान में, और थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी वहां पर, पीछे हटकर कट किया गेंद को, बहुत सुंदर वो टाइमिंग, और उसी टाइमिंग के बलबूते पर वो चौवा निकला इस मैच में। कलंगुट चैंप्स टीम पहले बैटिंग करी टॉस हारकर, और टीम का स्कोर पहुंचा 68 रन पर, जो कि खेल चलता 12वें ओवर का। इस बार ड्राइव किया, बहुत सुंदर टाइमिंग, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर पिच हेड कर देंगे, कितना सुंदर टाइमिंग वहां पर, आवाज, ये मधुर आवाज सुनाई दी वहां से। बल्ले के बीचों बीच लगी, इस फॉर्म से बल्लेबाज गुजर रहा है, ये आपको उसके बीचों बीच लगने के बाद पता चलता है। 69 ऑप्शन के बाद कट किया गेंद को, बल्ले पर बाहर हिस्से में लगी गेंद, और थर्ड मैन सीमा रेखा पर सिर्फ प्रयास रहेगा उस गेंद को रोकने का। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल चुके हैं। दूसरा चौवा इस ओवर में। 73 पर पहुंचा टीम का स्कोर। कलंगुट चैंप्स टीम जो कि बैटिंग करी इस मैदान पर, मेहर के साथ उसका साथीदार जो कि मनीष, ये जोड़ी मैदान पर। कितना बिल्कुल खूबसूरत माहौल। पहली गेंद ऑफ्टर के बाद कट किया, बिल्कुल अच्छा टाइमिंग, उसके बाद गेंद हल्की सी बाहर लगी, वही अंदाज था कट मारने का। कितना सुंदर बाबा, देखिए फील्डिंग अब चेंज जा चुकी है। अब लेग स्लिप के खिलाड़ी को बैकवर्ड स्क्वायर लेग को हटाकर स्लिप में रखा जा चुका है। अब बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, ये स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, लॉन्ग ऑन पर, एक मिड ऑन पर, ये कुछ ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद है। ओ इस बार देखिए देशांत को करने का प्रयास का पर चुके लाइन से, और गिलिया बिखरी वहां पर। इस बार की थोड़ी सी नीचे रही वहां पर, और विकेट नंबर 6 निकला मैदान पर। इक्कीस गेंदों पर 17 रन की बैटिंग मेहर की समाप्त हो चुकी है, और 6 विकेट नुकसान के बाद कलंगुट चैंप्स टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है। पहुंचा है टीम का स्कोर 73 पर। बारह ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, मतलब प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 6 रन प्रति ओवर बन चुके इस मैच में। हालांकि विकेट 6 गुजर चुके हैं, मतलब 6 विकेट नुकसान हो चुके हैं। अब निथल्ले बल्लेबाजों पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, जो रात को प्रेशर लगा शायद केकेआर की टीम के लिए। अब मनीष जाएगा स्ट्राइक पर, और मनीष के साथ दूसरा खिलाड़ी अब पहुंचेगा नया मैदान पर, नॉस्टैक एंड पर। अभी मैदान में स्ट्राइक पर मनीष, नॉस्टैक पर अभी, और गेंदबाजी में तब्दीली मोर्चे पर, स्पिन पर फिर से स्पिन का जादू। इस बार फिर से स्वीप किया, लेग ब्रेक गेंद थी, बिल्कुल गेंद को खेला गया स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर।
एक खूबसूरत टाइमिंग। देखिए गेंद को ऊपर किया, फ्लाइट दिया वहां पर, और शायद लेग स्टंप के बाहर वो पिच किया, अंदर से लेग स्टंप के बाहर से अंदर करके बुलाने का प्रयास करे, लेकिन जैसे ही टप्पा गिरा उसे शॉट को देखने को मिला। एक सुंदर स्वीप मैदान पर। चौवे के साथ टोटल 77 पर पहुंचा इस समय पर स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ 13 ओवर का, मतलब 20 ओवर का मुकाबला। आपके पास सिर्फ विकेट 4 बचे इस मैच में। पहले तेज गेंदबाजों ने बिल्कुल अटैक किया, गेंदबाजी में बिल्कुल सामने वालों को मुश्किलों में डाल दिया, लेकिन जैसे एक पार्टनरशिप बनी, ये मुश्किल आसान होगी मैदान पर। और सीधा खेला इस बार, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग वहां पर। देखिए सम्मान दिया गेंद को, एक अच्छी बॉल मैदान पर, जिस अच्छी बॉल पर एक सम्मान देता हुआ, एक बड़ी खराब गेंद पर वो चौवा निकला। मनीष वापस एक पर, और फ्लाइट क्या ऊपर दिया, और ऊपर वाली गेंद को सीधा खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। अपने निजी टोटल पर 49 पर मनीष। अच्छा ग्रेट, बिल्कुल सीधा खेला, बट सुंदर मैदान पर। 50 रन मनीष के मैदान में पूरे हो चुके। मनीष बल्ला दिखाइए, ये बहुत बारी इंपॉर्टेंट थी, जब हालात बहुत नाजुक थे और शायद उस वक्त जब टीम को आवश्यकता, तब ये बल्लेबाजी हो रही मैदान पर। एक सूझबूझ भरी, एक जिम्मेदारी की बैटिंग, और मनीष जब तक खड़ा रहेगा, आप 120 130 तक ये टोटल देख सकते हैं मैदान में। आकर्षक बल्लेबाजी करते हैं और 50 रन अपने, एक सुंदर बल्लेबाजी मैदान पर। एक शानदार बैटिंग मैदान में। अब आने वाला नया बल्लेबाज हम पास से गाल लेता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा 84 पर। ओह तेज गेंद। देखिए आज के लिए बहुत देखने को मिलता है। अब आईपीएल देखते तो आप देख सकते हैं कभी कभी बीच एक आध गेंद 100 के ऊपर डालते हैं स्पिन गेंदबाज, तेज डालते एक आध गेंद, और वही कुछ देखने को मिला, तेज गेंद। ये इस बार चेंज ऑफ पेस, हवा में गेंद को खेला है कवर पर, खिलाड़ी के लिए मौका, शायद लग रहा था ये मौका होना चाहिए मैदान पर, लेकिन उनसे थोड़ी सी दूर गेंद गिरती हुई। देखिए पहली गेंद बहुत तेज की, इसके बाद थोड़ा सा फ्लाइट दिया गेंद को, और 13 ओवर के बाद टीम का स्कोर 85 रन पर। जो दर्शक देश के पोस्टर से कहना चाहूंगा, आज काई वॉरियर्स टीम ने टॉस पहले जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और कलंगुट जो कि चैंप्स टीम को बैटिंग करने का मौका मिला। कलंगुट चैंप्स टीम ने शुरू के 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बनाकर और 3 विकेट गंवाए वहां पर। उसके बाद मनीष की एक शानदार बैटिंग, 6 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 84 पर पहुंचा। मनीष पहुंचा अपने निजी 50 रन पर। लाइन को थोड़ा सा बाहर रखा, और देखिए इशारा आता हुआ बिल्कुल बढ़िया वहां पर गेंदबाजी का। लेग स्टंप पर राउंड, और जब आप अमन और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और लेफ्ट हैंडर के लिए करते तो शायद तो वहां पर उतनी परेशानी हुई नहीं मैदान में। ओ फिर से बीट किया वहां पर, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान में, लगातार 2 गेंदे बीट।
ओ पीढ़ी से अच्छी बॉलिंग बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी इस बार बाहर निकली गेंद, वाइड बॉल का इशारा पहुंचा, वाइड के साथ 86 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। पॉइंट कवर पॉइंट। ओ फिर से इस बार क्लीन बोल्ट, इस बार गिल्लियां बिखरी वहां पर और सफलता वहां पर मिलती हुई। सेट खिलाड़ी नॉस्टैक एंड पर खड़ा रह गया क्योंकि पता है कि इस समय पर उनको मौके दें, लेकिन अपने आप में एक बिल्कुल बड़ा शॉट, एक पीछे हटकर, पीछे जाकर शॉट के लिए वो जगह ढूंढ रहे थे। गेंद बहुत तेज अंदर आई और सिर्फ अंदर नहीं, गिल्लियां बिखरी वहां पर। 7 विकेट नुकसान की बात 86। नया बल्लेबाज मोहित पहुंच चुका इस वक्त स्ट्राइक पर। 7 विकेट निकल चुके इस खेल में। अच्छा क्रिकेट हल्के हाथ से खेला, लेकिन हैंडल छोटा बल्ले का, ये बिल्कुल फर्क पड़ता है आपको। देखिए आप जब हैंडल छोड़ते ना तो गेंद वो उछाल नहीं लेती, वहीं पर गेंद रहती है, और शायद आजकल ये देखा जाता है। ओ फिर से अच्छी गेंद फ्लाइट किया वहां पर, कैरे में स्टाइल में रोका गेंद को, डॉट गेंद निकलती हुई टीम का स्कोर, मतलब जो वहां पर एक ही वाइड डाला अभी तक इस खेल में, एक सफलता भी वहां पर मिल चुकी है। 7 विकेट निकलने के बाद 86 पर टीम का स्कोर है। और रिवर्स पॉइंट पर सीधे हाथ में और एक विकेट मैदान पर। अब यह तो कहा नहीं जा सकता कि शॉट में कोई खराबी थी, शॉट बहुत सुंदर, लेकिन किस्मत खराब, सीधे फील्डर की तरफ निकली गेंद। और 8 विकेट निकलने के बाद मनीष अभी तक नॉस्टैक एंड पर जो सेट खिलाड़ी है मैदान में। रोहन, नया बल्लेबाज रोहन मैदान में पहुंच चुका है। अब काफी देर, लगभग 10 गेंदों के बाद मनीष स्ट्राइक पर पहुंचा है, काफी देर तक, और वहां पर 2 विकेट भी निकले। मनीष नॉस्टैक एंड पर सब कुछ देख रहा था, अब स्ट्राइक पर पहुंचा। अब यहां से देखा जाए तो 5 ओवर का खेल बचा है, 6 ओवर का, मतलब मैच ऑन ही है। और ऑफ टर्न के बाद से गेंद बल्ले पर लगी है,
स्पिनर ने बहुत तेज किया गेंद को और बाहर हिस्से में टक्कर गेंद सीमा रेखा से बाहर, चारों मैदान पर। 90 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मनीष अपने निजी टोटल पर पहुंचा 54 रन पर, एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। एक सिरा संभाल के रखा मनीष ने, सिर्फ संभाला नहीं, कुछ रन भी बनाए मैदान पर। 50 रन बनाए अपनी टीम के लिए, शायद 7 चाहिए किसी अन्य खिलाड़ी का मैदान में। इस खिलाड़ी को ये इसके पास वो काबिलियत है, ये किसी भी समय पर। लो फुल टॉस, ड्राइव किया गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, 1 रन वहां पर निकला। पहली 2 गेंदों में निकले 5 रन और अंतिम 4 गेंदों में किस तरह से माहौल बनेगा इस खेल का। काई वाली टीम ने पहले टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय। अभी तक अच्छी बॉलिंग मैदान पर। ओ पैर पर लगी और शायद देखिए विकेटों के सामने पा गए और एक विकेट निकला मैदान पर। बारी तोड़ से लड़खड़ा गई। मनीष नौशक एंड पर सिर्फ देख रहा है मैदान में। दिए की लव फड़फड़ाती हुई मैदान में देखने को मिल रही। आखिरी विकेट इस वक्त इस खेल में। नॉस्टैक में सेट खिलाड़ी 55 रनों की लाजवाब बैटिंग मनीष के मैदान पर। साथ देने के लिए अब जा रहा है आखिरी निथल्ला बल्लेबाज मैदान पर, पंकज मैदान पर। आखिरी विकेट। देखिए क्या कमाल का मैच था मैदान पर। 3 विकेट लगभग निकल चुके यहां पर और टीम का स्कोर अब यहां से 9 विकेट निकल चुके। आखिरी के 3 विकेट जो बिल्कुल खराब स्थिति में निकले, कुछ ज्यादा पार्टनरशिप हुई नहीं उस मैदान में। लो फुल टॉस, सीधा खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, 1 रन निकला। मनीष पहुंचेंगे स्ट्राइक पर। ठीक है, मनीष को पता है कि हालात कुछ नाजुक हो चुके हैं। जो हालात रात को एंड्रे रसल के हुए थे, आखिरी विकेट बचा था, 7 रन की आवश्यकता थी 36 गेंदों पर, उस तरह से हालात हो चुके मैदान पर। आखिरी विकेट है इस खेल में। ऑफ के बाद कट किया गेंद को, पॉइंट बाउंड्री लाइन पर गेंद गोली के रफ्तार से, उतनी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन वहां पर बनते हुए। इन 2 रन के साथ अपने निजी टोटल पर 57 रन पर पहुंच चुका है मनीष और टीम का स्कोर पहुंचा 94 मैदान पर। अच्छा मुकाबला क्रिकेट का, बिल्कुल बड़ा मैच मैदान पर। ऑन साइड पर हल्का सा गेंद को खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से एक बेहतरीन शॉट मैदान पर, सिंगल निकलता था। मनीष पहुंचेंगे स्ट्राइक पर, 95 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि इस खेल में और समाप्त हो चुका है 15 ओवर का मैदान पर। मतलब अभी तक अगर बात बताई जाए तो सिर्फ विकेट हाथ में एक बचा है, लेकिन मनीष सेट खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। संकेत यहां पर पहुंचता हूं गेंदबाजी के मोर्चे पर, मनीष स्ट्राइक पर रहेगा। देखिए आखिरी विकेट बचा है, इसका मतलब है कि मनीष को बिल्कुल पता है कि यहां से ओवर्स भी काफी बच चुके, लेकिन अगर यह आखिरी के विकेट के लिए अगर 25-30 की पार्टनरशिप हो जाती है तो मैच कमाल करेगा।
इस बार हवा में कवर के खिलाड़ी के ऊपर से सीमा रेखा से करीब गेंद को फील्ड किया जा चुका है। अब इशारा अंपायर का पहुंचेगा, बिल्कुल गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। कवर के खिलाड़ियों को लगा मुझे उंगलियों के आसपास से गिर गुजरी है, शायद मौका था थोड़ा सा, अगर ऊंचे कस का खिलाड़ी होता जो विकेट कीपर ऊंचे कस का उससे अगर ऊंचा कद होता तो शायद गेंद सीधे हाथ में थी मैदान पर। इस बार ड्राइव किया, सुंदर टाइमिंग मैदान पर, लेकिन रन नहीं वहां पर बनेंगे। पता है कि मनीष को स्ट्राइक चाहिए वहां पर। कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले पर लगी गेंद, थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, और उसी के साथ 100 रन भी पूरी टीम के मैदान पे। 103 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 100 रन भी पूरे हो चुके। हम शुरू में बता चुके 120-25 एक सही ना अच्छा टोटल होगा, टारगेट रहेगा सामने से, क्योंकि इस पिच पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा। सर देखिए तुलसी ग्रास है, इसलिए ग्रास है ना तो यहां पर गेंद किट होकर निकलती है और बहुत तेज निकलती है। ऑन साइड पर मिड विकेट पर क्या खूबसूरत वाला शॉट, कमाल का टाइमिंग मैदान पर। थोड़ी सी हाफ बॉल गेंद मिली मिड विकेट पर, टाइमिंग बल्ले के बीचों बीच सेट खिलाड़ी मनीष है, और मनीष को फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है। इस चौवे के साथ 107 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओह बल्ले पर लगी, शायद नहीं, इशारा कर दिया नॉट स्ट्राइक से, आना नहीं वहां पर। क्यों पता है कि यहां से अगर तेज गेंदबाज अगर आपके पास अगर जाएंगे तो शायद तो नॉट स्ट्राइक के बल्लेबाज के लिए खेलना मुश्किल रहेगा। लेकिन क्रिकेट में मैं तो कहूंगा औस बचे, शायद एक आध गेंद उनको खेलने को दी जाती तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आजकल सभी खेलते बैटिंग कर सकते, भारतीय टीम में भी देखते आप, ऑस्ट्रेलियन टीम में भी बहुत से बल्लेबाज आखिरी समय तक खेल सकते, बैटिंग कर सकते। और सीधा ड्राइव किया गेंद को, सही सोचा मनीष के वहां पर, 1 रन निकाला, 108 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और बिल्कुल जानते हैं कि अपने हाथों में स्ट्राइक रखनी पड़ेगी तो ये काम करना पड़ेगा। और एक सेट खिलाड़ी को ज्यादातर आप स्ट्राइक पर ही रखिए, सेट खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहता जाएगा तो 130-150 तक ये टोटल बन सकते हैं इस मैच में। 108 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल समाप्त हो चुका है 16 ओवर का, अंतिम 4 ओवर का मुकाबला बचा इस खेल में। ओह बल्ले पर लगी है, स्लिप के बगल से 4 रन मैदान में। आनंद का हाथ स्वागत किया चौवे के साथ मैदान पर, और 112 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए जहां तक बॉल बैटिंग का सवाल है मैदान पर, अमूमन देखते हैं मैदान में आखिरी के ओवर्स या फिर आखिरी विकेट रहते एक स्लिप लगाया जाता है, लेकिन इस बार तेज गेंद में जो स्लिप नहीं रखा वहां पर, उसका भी पहले मैच में पहले नुकसान हो चुका ओवर में। इस बार स्पिनर आनंद ने बिल्कुल अच्छी बॉल की मैदान पर, लेकिन थोड़ी सी तेज की वहां पर, जहां पर गेंद निकली स्लिप के बगल से।
लेग स्लिप पर अब खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर तैनात है। एक स्लिप में अब लगाया जाए वाइडिश गली और स्लिप या आसपास है, क्योंकि पता है कि वहां से गेंद गुजर सकती है। और पिच गेंद सीधा खेला, साइड स्क्रीन पर बिल्कुल जाकर टकराती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 मैदान पर। मनीष अटैकिंग बैटिंग 116 पर पहुंचा, टीम का स्कोर मैदान पर। शॉर्ट पे गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया, स्कोर ले खिलाड़ी के हाथ में और ये आउट मैदान पर। अपने आप से बहुत नाराज है, खराब बॉल था, शायद पोजीशन वहां पर ठीक हुई नहीं, गेंद बल्ले पर जल्दी टकरा गई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। वहां पर मनीष की बारी समाप्त और टीम ऑल आउट हो चुकी है, जो कि टोटल स्कोर 116 रन पर यह पूरी टीम समाप्त हो चुकी है। एकमात्र सफल बल्लेबाज मनीष, जिसने अपने निजी कोटे में 79 रन की एक लाजवाब बैटिंग समाप्त। एकदा दोन तालियां बजे, अकेला खिलाड़ी बिल्कुल लड़ता रहा आखिरी समय तक। मनीष आखिरी समय तक लड़ता रहा, लेकिन मनीष आउट हो चुके और 79 रन की बारी समाप्त मैदान पे। 116 पर पहुंचा टीम का स्कोर। वेल डन बैटिंग, वेल डन, बहुत सुंदर बैटिंग मैदान पर। काई वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया। इस वक्त 116 पर 117 की आवश्यकता, जो कि जिससे पीछे इस वक्त काई वॉरियर्स टीम को और कलंगुट चैंप्स टीम को अब 117 रन रोकने पड़ेंगे अपने घातक गेंदबाजी के साथ मैदान पर।
Yes, once again, welcome back. Let's start with the second innings. 117 runs is the target in 120 balls. And the two opening batters out in the center for the Anand on strike and Sanket on non-striking end. And Sanjay with the ball to start the proceedings for the Calangute Champs team. Qayi Warriors winning the toss decided to bowl first, and Calangute Champs posted a target of 117 runs in 120 balls for the opposition team. So Qayi Warriors, the ask is 117 runs to get in 120 balls. Here is Sanjay bowling the first ball. Missing his line completely. They're starting off with the wide, a loosener to start the proceedings. So first runs on the board. It's not a big ask. But looking at the circumstances and the way the wicket played in the first innings, hoping to see a cracker of match, the first match of this tournament. And this time, nicely flicked off the pads. The ball goes away for the boundary. So great start by Qayi Warriors. And by Anand, the first ball was down the leg, wide ball, and thereafter onto the pads, just flicked away for the first boundary. So great start, a loosener to start the proceedings once again. So change in field there. Getting the fine leg in place. There is a deep point and fine leg in place for Sanjay. This time much fuller, it's up in the air. And it's taken. A great comeback by Sanjay. Couldn't get the connection, couldn't get the timing. Mistimed it completely and straight into the hands of the fielder there. So Anand departs after scoring a boundary. So the first wicket down on the score of 5 runs for Qayi Warriors. Swapnish, the new batsman in, and will be on strike. Manish taking that catch. Nicely judged. And here's the catch, Anand. Just scored a boundary thereafter, once again looking for the same shot. But this time much squarer. Couldn't get the connection. Just lofted it and straight to the fielder. Nicely judged catch. So the first wicket down for Qayi Warriors on the score of 5 runs. We saw in the first over also wickets were tumbling. Started off with the wickets in the first over itself, and now in the second overs, Sanjay with the breakthrough. Swapnish on strike. Once again, the waiver delivered down the leg, wide ball, another wide ball. The second wide of the over. It's not a big ask. But cricket is a funny game, and we saw yesterday also the match between the KKR and Punjab team, a low scoring match. Coming around the wicket, and the same thing once again for Sanjay. Change of side, but the result is the same. Bowling it down the leg. Struggling a bit with the line at the moment for the left-handers. Another one left-hander replacing the another left-hander here.
This time onto the mark here. Nicely played there by Swapnish. They know it's not a big ask, not a big score, so need to just play sensibly, not take too many risks. Much fuller, full toss played down the ground. Not much timing on that occasion. Just to the longer fielder for a single. And up to the mark here with a single. Sanket will be on strike now. Will face his first delivery. Sanket and Swapnish. And Sanjay with the ball. Nicely ball left alone by Sanket. Note, that's the first over of this innings. Just need to see the bounce in this wicket. In the first inning there was something for the bowlers, but now it's hot and humid out here. Should be easy for the batters. But once again outside the off stump and a dot ball to finish off the first over. After completion of the first over, score is 8 runs on the board with the loss of 1 wicket. Qayi Warriors. And this is the MACQUA State Premier League. The prime sponsors for these tournaments are Majestic Bhojan Restaurant Purvarim, Deserts and more, Ashirwad Hotel Purvarim. The sponsors for this tournament are Events Genie, Engine Experiences Private Limited Mumbai, and broadcast partners are AB25. So the first match of the tournament, day 1 of this MACQUA State Premier League between the Calangute Champs and Qayi Warriors. The target is 117 runs in front of Qayi Warriors to win this match. And it's Abhil to bowl the second over from the pavilion end. 8 runs with the loss of 1 wicket after the first over. Just 8 runs coming of the first over. And Swapnish will be on strike once again, moving the fielders around, setting the field for the left-handed batter. Always a problem for the opposition whenever there is a right-hand and left-hand combination out in the center. And here it's so from Qayi Warriors, Swapnish and Sanket. Swapnish the left-handed batter and Sanket on non-striking end, the right-handed batter. And Abhil with the ball. A short ball, nicely played, nicely timed, and a boundary. So great shot by Swapnish, and the first boundary for him. It was a shorter delivery there, a loosener once again, off the target, much shorter, and nicely played by Swapnish, just clearing the infield quite easily, and a boundary. And the score moves on to 12 runs with that boundary. Great shot, and there is the fielder there. This time pretty wayward, a wide delivery, one was a shorter delivery, and now trying to change the length on that occasion. Just going away from the batters, but too wide, and it's a wide ball. We saw in the first innings the brilliant bowling by Yash, and the same needs to be continued. They need to bowl in good areas here, the Calangute Champs team. Not a big ask, but they can defend this, as we saw yesterday also during the IPL match. Just need to bowl into the right areas and build some pressure. Once again trying to bowl it fuller but wide. The second wide of the over. We saw in the first over also the extras.
Some easy runs given to the opposition by Calangute champs here. Abhil, the bowler, once again not getting it right, struggling. It's an outside edge and away from the slip fielder. The ball goes away. Second boundary of the over and second boundary for Swapnish. Abhil got the outside edge he was looking for, but it was too wide of the slip field and ball running away for the boundary. No third man there. And this time, what a shot! A brilliant shot, nicely pick up shot by Swapnish. Third boundary of the over. So great start. He's on song here, taking the full advantage of the power play and setting the tone for this chase here. It's Swapnish. Bowler under pressure now, Abhil. Wonderful delivery, nice comeback delivery here to end. Still a delivery to go, a wonderful delivery into the block hole. Nice comeback delivery by Abhil. They need to try and get the wicket here. And for Qayi Warriors, they need to stitch in a partnership, take the game deep. It's a full toss, what a shot! A brilliant connection and a ball goes into the covered region for a boundary. Fourth boundary of this over, an expensive over coming to an end after completion of 2 overs. Score is 26 runs with the loss of 1 wicket. The Qayi Warriors. So after completion of 2 overs, score is 26 runs on the board with the loss of 1 wicket. More 91 runs needed now to win this match for Qayi Warriors. And Sanket will be on strike, will face Sanjay in this third over. Lofted, over the infield there, over the covers fielder. The ball is running away. Nicely chased down by the long off fielder. Just trying to take the full advantage of the power play. A lofted try on that occasion from Sanket. More couple of runs. Once again trying to go for that expensive drive. Trying to go aerial downtown but missing it completely. They are going for it here, the batters of Qayi Warriors. This time on a good length, they are going for a quick run. Yes, I mean they will get it quite easily in the end. So nice thing to do, tried something. Tried to charge the bowler on the first 2 occasions, but thereafter a sensible play just guided it towards the point field for a single. And that's the way to continue in this match because Swapnish is looking in a great touch. Scored some brilliant shots in the previous over. Once again the short ball and the ball goes. One bounce over the boundary rope, so another short delivery and it's been dispatched for a boundary. He is dealing in boundaries here, Swapnish. A wonderful shot, nicely connected
just clearing the infield quite easily, and one bounce, the ball goes over the boundary ropes. And with that boundary, score moves on to 33 and change of fields here. There is a deep man in the deep now on the leg side. Another short ball. And this time once again wonderfully connected away from that fielder. He's toying with the field here, Swapnish. Turning on the hit. And started the chase with a bang. Just dealing in boundaries. On the both occasions, he's a great puller of the ball. And he's delivering at the moment for Qayi Warriors. Two short deliveries. One in front of the square leg and now into the square leg region. The fielder is more finer now. The deep square leg. This time onto the offside and it's missed by the backward point fielder. Just in front of that fielder. Just slashed it. And it was in front of that fielder. He missed it completely and another boundary to end the third over after completion of 3 overs. Score is 41 runs with the loss of 1 wicket. 41 after completion of 3 overs. And it's Mohit. Change in bowling here. Mohit, the captain, has gone to his spinner now. Both the dot ball, both the opening bowlers finding it pretty hard, and Swapnish going against them. So is Mohit. Sanket on strike. And once again, just over the fielder there. And it's a boundary, it's a boundary. It's a boundary once again. He put in a dive there, a slide, but couldn't save that boundary. Just over the inside fielder, just over the head of the point fielder, and the ball races away towards the boundary rope. Pretty fast outfield on this venue. And they are charging now, they are charging towards the victory, charging towards the score. And with that boundary, score moves on to 45. This time just shortening his length on that occasion. Bowled a fuller delivery, was a lofted drive just over the point fielder boundary, and thereafter just quartering his length. Swapnish and Sanket, the left and right hand combination out in the center for Qayi Warriors, and they are delivering at the moment, stitching in a great partnership at a good healthy rate. Swapnish betting on 29 of 11 deliveries,
And Sanket batting on 8 fronts of 7 deliveries. Nicely bowled, much fuller. Respectfully played. Much fuller on that occasion by Mohit. They need to get in a wicket here, the Calangute champs. Much shorter. Outside the off stump. Was trying to cut that ball, but just left it alone and a dot ball. Oh, swing and a miss. It was in the arc, and he misses it. And here is a dot ball to finish off the 4th over. After completion of 4 overs, score is 46 runs on the board. So just a boundary on the first delivery. A quiet over. After 4 overs, score is 46 runs. With a loss of 1 wicket. The Qayi Warriors, the 2 batters are going pretty well at the moment. It's Swapnish and Sanket. And to get into this match, to get back into this match, it's just 1 wicket for Calangute champs. They need to get that wicket. We saw in the first inning Qayi Warriors picking up 5 wickets in the power play. And in the second innings, the bowlers of the Calangute champs are struggling a bit, especially the fast bowlers couldn't get the rudder right. They were pretty expensive. Change in bowling once again and straight to the fielder, he drops it. A sitter into the hands of the fielder there. And he drops it. It was a loosener by Mohit. Mohit Yaduvanshi bowling it from the commentator's end. The left arm bowler. A loosener there. Played straight to the fielder. Just dropped it. What a connection. This was into the slot. Now it goes. It's a huge one. The first maximum for Sanket and for Qayi Warriors. A wonderful shot. He missed on the first occasion, but thereafter it was into the slot and it's been dispatched down the ground for the maximum one. $50 up for Qayi Warriors in the 5th over itself. Once again, a much shorter, left alone. That's the power play. Still the power play is going on. The 5th over of this innings. Once again, nicely cut, but not getting the power behind that shot. A dot delivery. The fuller delivery was dispatched for a maximum one. Thereafter, just quartering his length once again, the bowler, Mohit. Much slower through the air. Just finding it difficult to get away on that occasion, Sanket. Just played to the fielder there. And this time, once again, it was loose now. But couldn't find the gap. Will be annoyed with himself. On the 2 occasions, he couldn't find that gap. Much slower, bowling is much slower. Clever bowling here by Mohit. And this time it's into the gap. The ball goes over the boundary. A loosener. And here is the end of the 5th over after completion of 5 over. Score is 57 runs with the loss of 1 wicket. So great start. Great use of power play by Qayi Warriors. They are chasing a target of 117 runs. And they have managed to score 57 of the first 5 overs with the loss of 1 wicket. You're witnessing the MACQUA State Premier League 2025, the day 1 of the tournament. And the first match going on between both these teams. 117 runs is the target
for Qayi Warriors. And they have managed to score 57 of the first 5. Great delivery there. Trying to play it from the back foot, missing it completely on that occasion. Swapnish, he's looking good and needs to continue. We saw a brilliant inning. A reverse shot. What a connection, just over the infield. Comfortably clearing the infield, the inner half. And the boundary goes. Another boundary for Swapnish. The reverse shot, a wonderful connection. We saw a wonderful inning by Manish in the first innings for Calangute Champs. And in the same pattern, Swapnish is going for Qayi Warriors to chase down this target. He's batting on 33 of 17 deliveries now. This time much quicker by the bowler. A reverse shot and thereafter the change in length. Wonderful delivery and clean bowled. The wicket they were looking for. Finally they have got the wicket and a wonderful delivery to get that wicket. And Swapnish departs after scoring 33 of 18 deliveries. So second wicket down and it's Mohit with the breakthrough for Calangute Champs team. "61 runs with the loss of 2 wickets. Just losing the second wicket there, Swapnish was brilliant, scoring 33 of 18 deliveries. He was looking great, but a wonderful delivery to get a set batsman. And it's Mohit with that breakthrough, and the new batsman in. It's Samit and will be on strike, will face Mohit in this final over, the final over of power play, chasing a target of 117 runs, not a big ask. Let's see how the innings goes, how the bowlers bowl. Samir will be on strike. The right-handed batsman in for Qayi Warriors. Nicely struck, that powerfully struck. Straight to the fielder. A powerful batter out in the center. Sami for Qayi Warriors. Just starting his innings with that single. And that's the way to do it. That's the way to go to progress in these innings. It was a wonderful inning of Swapnish, which has powered them in this run chase. Nicely played once again. So a dot delivery to finish off the power play, and after completion of 6 overs, score is 62 runs with the loss of 2 overs. So great power play for the Qayi Warriors. 62 runs after completion of 2 overs. So 62 runs with the loss of 2 wickets and more 55 runs needed.
of 84 deliveries. 55 of 84 deliveries is the ask for Qayi Warriors. Samir on strike. Mohit with the ball. Nicely bowled. Some extra bounce there on that occasion. A bang win delivery. The left arm bowler bowling it quick and straight. Once again, this time the inner half of the blade. They are going for the run. They are going for the run. And they will get it quite easily. There was a miscommunication, a late call. Mohit bowling the Chinaman there, the left arm bowler, just turning in the ball. This time much fuller, full toss, just played along the carpet to the long on fielder, another single. There's more 53 runs needed now. This time onto the toe, onto the pads, onto the leg side. Leg by signal by the officials. Not taking any risk, doing it singles at the moment. We saw in the first innings also. That's the way to do it. This time much shorter, just keeping it low. Just kept low a bit on that occasion. Was fired in by the bowler. They're going pretty well here, Qayi Warriors. And some wonderful bowling, some great spin bowling. This time the ball is up in the air, falling short of that longer fielder. The ball was always going away from that longer fielder, and just a single to finish off the 7th over after completion of 7 overs. Score is 66 runs with the loss of 2 wickets, the Qayi Warriors. This is the MACQUA State Premier League 2025. The prime sponsors for this tournament are Majestic Bhojan Restaurant Purvarim, Deserts and more, Ashirwad Hotel Purvarim. Sponsors for this tournament are Events Genie, Engine Experiences Private Limited Mumbai, broadcast partners AB25. So you can witness this tournament live on AB25 YouTube channel. And the ask is 117 runs, the target for Qayi Warriors, and they have managed to score 66 runs with the loss of 2 wickets after the 7 overs. And once again, Mohit continuing, trying to go for the drive, missing it on that occasion. So starting off with the dot delivery once again. They have been successful in applying the brakes on scoring here. And once again, nicely played. A great delivery, wonderful delivery. Playing it onto the front foot. Nicely played, but couldn't find that gap to the backward point fielder. Another dot delivery. Dot deliveries and a wicket will build on the pressure on the opposition straw. This time the full toss. A misfield by the point fielder. And just a single, one more single, score moves on to 67. Both these batters not taking any risk. Samir will be on strike now. Will face Mohit. Oh, nicely timed, but straight into the hands of the fielder there. It was wonderfully timed.
but straight to the fielder. Will be unhappy with himself. Nicely timed it, but found the fielder in the deep, and another wicket, the third wicket down. Sami departs. So the third wicket down, and the new batsman in is Sarvesh. Will be on strike, will face Mohit. As we were saying, there were no risk taken, and Sami is just going for that fuller delivery, nicely timed, but straight to the fielder there. The third wicket down, score is 67 runs, more 50 runs needed now, more 50 of 73 balls. And Sarvesh on strike, Sarvesh and Sanket. They need to stitch in a partnership here, take the game deep. Sarvesh on strike, Mohit with the ball. Nicely bowled, just taking the full advantage of the pace of the bowler. Just guiding it through the boundary. So great start by Sarvesh of this innings. A tickle there, just taking the ball with that pace to the boundary ropes. And here is the end of the 8th over. After completion of 8 overs, score is 71 runs with the loss of 3 wickets. Qayi Warriors. This is the match going on between the Calangute Champs versus the Qayi Warriors. Qayi Warriors won the toss, elected to bowl first in the first innings. And Calangute Champs managed to post a target of 117 runs in their 20 overs, all out on 116. Brilliant bowling performance by Qayi Warriors. And now it's Mohit once again continuing. The lofted shot, just short of that fielder. He's trying to score some short. Sanket always looking for the boundaries. And now it's Sarvesh will be on strike and will face Mohit. One Mohit pulling the right arm leg spin, another the left arm leg spinner, the Chinaman. There is a slip in pace. And a protection on the onside. Nicely bowled, much fuller, played along the carpet to the long on fielder for a single. 72 with that single. They're going at a pretty healthy rate here, the Qayi Warriors. Much shorter, just guide it. And a single, one more single. They know they were guided during the break. No risk should be taken, just singles and doubles. Go much closer towards the target. And with the way Swapnish played that innings, just give them something. And here is one more loose now. A banging short delivery. Quite nicely played by Sarvesh. And another boundary for him. And with that boundary, score moves on to 78 now. Just 39 more runs needed, 39 more runs
to win this match for Qayi Warriors. Mohit bowled some brilliant deliveries in the previous over also. Just that one loosener, and just that's enough for this fielding side. And now there is deep point, so protection in the deep, change in field. That's the right kind of field for this bowler, because he tends to bowl that shorter delivery outside off stump again and again. And now there is protection for him. Ball around the wicket for Sanket. Nicely lofted, wonderful shot. Nicely played, the ball is going into the gap to the boundary rope. So the second boundary coming around the wicket and bowling that off spin. Just turning the ball away, trying to bowl it away from Sanket, take it away from him. But wonderful connection by Sanket. The ball goes away for the boundary. And a boundary to finish off the 9th over. After completion of 9 overs, score is 83 runs with the loss of 3 wickets. And change in commentary box. Let's move on to Krishna sir. थैंक यू साहिब. लगभग शुरू किए पावर प्ले के, उसमें अटैक किया मैदान पर, उसके बावजूद मैदान में मैच को आसान बना दिया और 34 रन की आवश्यकता मैदान पर. मैच एक तरफा बना गया क्योंकि यहां से शुरुआत हुई ना, वो बहुत तेज हुई मैदान पर. 10 के ऊपर शुरू हुई सही बल्लेबाजी और उसके साथ अब विकेट हाथ में बचे और गेंदबाजों को सिर्फ काम बचा है कि यहां से लेकर वापसी के लिए आपको एक ही रास्ता बचा, वो विकेट मैदान पर. अच्छा गेंद, बिल्कुल अच्छा. टप्पा खाते गेंद ने अतिरिक्त उछाला प्राप्त कर लिया. गेंद थोड़ी सी टप्पा खाती लेग ब्रेक हुई, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर गेंद निकली. ठीक है, अमन यहां से बताना उतना आसान नहीं लगा हमारे लिए. फिर से लेग ब्रेक. वाह वाह फील्डिंग, तारीफ करने पड़ेगी विकेट कीपर की. भले ही वाइड हो लेकिन कम से कम टीम के लिए और 4 रन बचे हैं मैदान पर. और नहीं बाउंड्री थी मैदान में. बहुत मुश्किल होता है विकेट के पीछे काम करना. और पिच गेंद सीधा हवा में, लॉन्ग ऑफ पर मौका. ओ कमाल की फील्डिंग और ये आउट मैदान पर. ना 84 पर पहुंचा टीम का स्कोर. देखिए और पिच गेंद थी सामने खेला, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी को क्लियर न कर सके, सफलता वहां पर मिली और सफलता के साथ साथ यहां बिल्कुल एक और विकेट निकला मैदान पर. सर्वेश मैदान पर आउट होकर वापस आता हुआ. अब नया बल्लेबाज सर्वेश की जगह पर प्रशांत पाटिल मैदान पर. सब कुछ ठीक ठाक था, अलबेल था, शायद जरूरत नहीं थी ऊपर खेलने की. देखिए हालांकि और पिच गेंद उड़ी, लेकिन अगर ड्राई करते तो शायद वहां पर रन बन जाते. और इस बार फिर से गेंद को कट किया पॉइंट पर. उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में. देखिए आगे किया था, लेंथ को ऊपर किया था, वहां पर गैप ढूंढ न सके मैदान में. डॉट गेंद निकली. पाटिल जानते हैं कि स्पिन के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल ही तो उतना नहीं तो हमेशा. और लेग स्टंप के बाहर भटक गए. वाइड बॉल,
दो ओवर में, इस ओवर में 2 वाइड जरूर डाले, एक विकेट निकली मैदान में। देखिए हर एक खिलाड़ी का अलग सा अंदाज रहता है हमेशा। वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते थे भाई स्पिनरों को रन बनाने के लिए रखा जाता है। ऑफ्टर के बाद कट किया गेंद को, बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान में, डॉट के निकलती हुई, डॉट के साथ 85 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। 117 का पीछा करना पड़ेगा और 32 रन की अभी तक आवश्यकता इस मैच में, जिससे पीछे और स्टंप पर ये गेंद शायद भटकते हुए फिर से वाइड बॉल मैदान पर, वाइड गेंद वहां पर और एक रन दे दी मैदान पर और एक रन के साथ 86। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेला, बिल के पीछे हटकर हल्के से धकेला गेंद को, वाइडिश गली पर वहां पर फील्ड हुई और शायद बैकअप बल्स बिल्कुल ठीक ठाक मैदान पर, रन एक ही बनेगा। एक रन के साथ 87 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान, मतलब 30 रन की अब आवश्यकता इस मैच में, जिससे पीछे सामने से गुच्छों में विकेट लेने पड़ेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से जगह बानी अपने आप में बिल्कुल कवर पॉइंट पर विकेट को फील्ड किया जा चुका। एक रन और निकला और एक रन के साथ 88 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। नया गेंदबाज मनीष मैदान में, और पिच गेंद हवा में खेला गेंद को, बिल्कुल बढ़िया मौका वहां पर, कैच थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन प्रयास भरपूर के तौर पर गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी थी। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लपेटने का प्रयास किया, गेंद ऊपर चली गई, वहां से एक रन निकला। 89 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, 117 का पीछा करना पड़ेगा। ओ अच्छा डिफेंस, हल्का से इनको पुश किया, एक ही रन वहां पर बनेगा। देखिए इक्का दुक्का बनाकर मैच को थोड़ा सा आगे ले जाए, पता है कि यहां से मैच आसान बनेगा। कई वॉरियर्स टीम जो कि इस वक्त इस मैच में लगभग जीत के दाव पर खड़ी है, पता है कि यहां से अगर सिंगल डबल बनता है तो भी कोई नुकसान नहीं रहेगा, लेकिन कलंगुट जो चैंप्स टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा, विकेट चाहिए मैदान पर। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, पॉइंट पर उतनी बढ़िया फील्डिंग, रन रोके जा चुके हैं मैदान में, सुंदर फील्डिंग मैदान पर। और फिर से कट किया गेंद को, कवर पॉइंट पर हवा में बिल्कुल चेयर को, शॉट में ताकत थी वहां पर, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, एक्स्ट्रा कोई खिलाड़ी पीछे 2 कदम निकल चुका है, वहां पर एक ही रन बनेगा और शायद वहां पर 2 रन बनते हुए मैदान पर। देखिए धीरे धीरे बिल्कुल मैच आसान हो रहा है मैदान पर। शुरू की आक्रामक बैटिंग काई वॉरियर्स टीम की, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लक्ष्य को आसान बना दिया। और पिच गेंद एक्स्ट्रा को सीमा रेखा पर, खिलाड़ी है लेकिन बन जाएगा दर्शक मैदान में। 4 रन के मैदान पर।
96 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। थर्टी फाइव पर संकेत बैटिंग करता हुआ मैदान पर। संकेत जो कि अपने ऑफ स्टंप के बाद कट किया गेंद को वाइडिश गली पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन नहीं, वहां से शायद अंपायर ने कर दिया, पहुंच गए, बहुत तेज थे वहां, बहुत तेज निकले, एक रन निकला और एक रन के साथ 97 पर पहुंचा, 97 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 117 का पीछा करना पड़ेगा इस मैच में। मात्र 20 रन की आवश्यकता, 20 टू विन है मैदान पर। और शायद अगर बात यहां से बताई जाए, संकेत अपने निजी टोटल पर अभी तक बताया जाए तो 36 ना, मेहर के अपने मोर्चा सामने संकेत को रोकने के लिए, लेकिन लक्ष्य आसान हो चुका है मैदान पर। और फिर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। टू रन की लाजवाब बैटिंग संकेत की स्केल में, एक जिम्मेदार की भरोसी बैटिंग मैदान पर, इसके बलबूते पर काई वॉरियर्स टीम इस मैच में वापसी कर चुकी है। ओ, इस बार चारों खाने चित बीट हो गए, टप्पा खाते सबमरीन डेविल नीचे लगे, वहां पर कुछ भी समझ नहीं सके और लेग ब्रेक गेंद दिए, थोड़ी सी बाहर भी निकली हल्की सी। कलंगुट चैंप्स टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओ, हल्के से पुश किया, वो सिंगल निकलेगा, एक रन वहां पर बनता हुआ, एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 104 रन पर। अच्छा सेंसर पीछे हट गए, वहां पर टाइमिंग कमाल का था, पीछे हटकर जो ड्राइव किया ना वो सुंदर था, लेकिन सीधे खिलाड़ी के सिलार की तरफ गेंद निकल चुके, वहां पर डॉट गेंद निकली। देखिए एक आध दूसरे से डॉट उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा रन नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ 13 रन की आवश्यकता। ऑन साइड पर खेलेगा प्रयास किया, क्या बल्ले पर लगी, पैड पर लग रहा है ऐसा है कि हम पर बिल्कुल इशारा करेंगे शायद कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल पैड पर ही गेंद लगी वहां पर। एक रन निकला लेग बाइस के रूप में। अब मात्र संकेत को चाहिए अपने 7 रन अर्धशतक से पीछे। 43 पर संकेत बैटिंग कर रहा है मैदान पर और लक्ष्य जिससे पीछे 12 रनों का। ओह, बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल सीधा खेला, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए संकेत को। वहां पर डॉट गेंद निकली, डॉट के साथ समाप्त हो चुका है ओवर, जो कि 12 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम को अब जीत से पीछे मात्र 12 रन की आवश्यकता। टॉस जीता काई वॉरियर्स टीम ने, पहले बॉलिंग के मैदान पर शुरू किए। कलंगुट चैंप्स टीम ने 3 ओवर में 10 रन पर 3 विकेट गंवाए थे, लेकिन टोटल रखा उसके बाद सामने 116 रन का, इसमें बेहतरीन बैटिंग की मैदान पर मनीष ने 79 रन की एक लाजवाब बैटिंग, जिसके बलबूते पर 116 बनेगा मैदान पर। टीम ऑल आउट हो चुकी वहां पर, उसका पीछा करते हुए काई वॉरियर्स टीम ने अब तक की कहानी में जिससे 12 रन पीछे मैदान पर। साईनाथ के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का,
लो फुल टॉस हवा में, नहीं वहां से तो दिख रहा है गेंद छूट चुकी है। प्रयास भरपूर अच्छा किया था, बिल्कुल अच्छा प्रयास मैदान पर, पल भर के लिए लगा वहां पर शायद क्या चीज ले जा चुके, लेकिन आखिरी घड़ी में क्या छूटा, और फिर देखिए मुस्कुराहट चेहरे पर है। और शायद वहां पर वाइट तो जरूर मिलेगा, वाइट और प्लस वहां पर एक और मिलेगा, मतलब 2 रन मिलेंगे। अब जीत से पीछे मात्र 10 रन की आवश्यकता। 7 रन अपने अर्धशतक से पीछे, संकेत स्ट्राइक पर, और बस सीधा खेला साइड स्क्रीन पर, गेंद टकरा गई जाकर, और अंपायर का इशारा आ चुका है लॉन्ग ऑन से बाहर। 6 रन के लिए अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर मैदान पर संकेत मैच में। देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए 50 रन मतलब एक बहुत बड़ा विश्वास रहता है। अब 49 बनाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 50 की वैल्यू सबसे रहती है, और 50 रन अगर आप बनाते तो कॉन्फिडेंस जो है ना ऊपर जाएगा वो बहुत दूर, क्योंकि अभी तक 4 रन जी से पीछे और आपको बनाने पड़ेगा सिर्फ 1 रन। और ड्राइव किया गेंद को, कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन वहां पर बनेगा, और अर्धशतक जो कि पूरा होता है मैच का। एक सुंदर बैटिंग मैदान पर संकेत द्वारा, संकेत कैमरामैन की तरफ देखिए और बल्ला उठाइए, पीछे आपके कैमरामैन मौजूद है। बहुत सुंदर बैटिंग मैदान पर, देखिए हम बहुत बार कहते हैं इतनी बढ़िया बैटिंग मैदान में एक शांत बैटिंग, कोई जोखिम नहीं उठे वहां पर। लाइन को दूर रखा, अब जिससे पीछे मात्र वाइट के साथ 2 रन की आवश्यकता मैदान पर। काई वॉरियर्स टीम लगभग जीत के दांव पर खड़ी है। फुल टॉस गेंद कवर बाउंड्री पर, और इसी शॉट के साथ यह मुकाबला भी लगभग समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बैटिंग मैदान पर, उसमें संकेत की बिल्कुल अच्छी बैटिंग, 50 रनों की एक नॉट आउट भूमिका संकेत ने निभाई अपने निजी टोटल पर, एक बहुत सुंदर बैटिंग। और साथ अगर बात बताई जाए तो काई वॉरियर्स टीम ने इस मैच को जीता, उनका हार्दिक अभिनंदन मैदान पर।